Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology. Today we will do chapter number 60 from Guide 10 and this is from unit number 11. Today's chapter will be focusing on different states of the brain activity. और डिफरेंट स्टेट से हमारा मतलब ये है कि आप दिमागी तौर पर किस स्टेट में हैं. सो व्हाट इज़ योर स्टेटस ऑफ मेंटल एक्टिविटी. और बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं. फॉर एग्जांपल स्लीप, brain waves, epilepsy, psychosis and dementia. Actually, the whole chapter will be largely focusing on sleep patterns. So that's the thing that we have to discuss today. बाकी जितनी चीज़ें हैं, for example, epilepsy, psychosis and dementia, all are written in the blue boxes. और blue boxes आपको पता है गाइड 10 के इस तरह से हैं कि they try to touch upon the clinical stuff. और clinical stuff बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, but we'll obviously be discussing those in great detail in pathology and medicine videos. So today's video is largely going to be focusing on sleep patterns. Okay, so stay tuned. अभी सोना नहीं है लेक्चर में, पता चले स्लीप पे लेक्चर है तो सो के अपना टाइम गुजार रहे हैं. Sleeping is not allowed. Okay, now all of us are aware of many different states of the brain activity including sleep, wakefulness, extreme excitement, and even different levels of mood such as exhilaration, which is also kind of excitement, depression, and fear. देखिए ये आपके वो कहते हैं ना मानसिक संतुलन. मुन्ना भाई आप लोगों ने देखिए सबने, उसमें एक वर्ड यूज़ करता है केमिकल लोचा है दिमाग में. सो योर ब्रेन इज एक्चुअली इन डिफरेंट स्टेट्स और आप सब ने ये फील की हुई है. ऑब्वियसली आप सब लोग सोते हैं रोज. सो स्लीप स्टेट आपको पता है कि योर ब्रेन एंटर्स इनटू a state of sleep. Then you are awake and सारा दिन आप काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं. So wakefulness, excitement, खुशी, गम, depression, fear, ये सारे आपकी different feelings हैं. इन तमाम फीलिंग्स में आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड होती हैं, विच इज़ व्हाट वी कॉल द ब्रेन वेव्स. और जिस तरह हार्ट की वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं यूजिंग एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बिल्कुल इसी तरह ब्रेन की वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं यूजिंग एन EEG, which is again slightly touched upon in this chapter, but we are not going into the details. So we'll simply focus on sleep as I told you. Okay? So that's the topic of discussion for today's video. Sleep is defined. अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ इससे पहले कि मैं आपको स्लीप समझाऊँ. मैं जब भी न्यूरोफिजियोलॉजी या न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर्स देता हूँ, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि वेल मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर द थिंग्स दैट वी डोंट नो. We do not understand how does our brain work. We do not understand how the brain handles so many different circuits. So for example, how do you remember things? How do you have affection with? So we know very little about these things. So we know कि जी एक limbic system है, hypothalamus है, thalamus है, cortex के साथ. We know very little. हमको बहुत ही कम मालूमात हैं. Majority of the things we actually don't know. So with this notion, if you start studying any complex subject, it will help you because now you know at the very outset कि हमारी understanding इस particular subject matter की जो neurophysiology है वो बहुत ही minimal है और जितना कुछ पता है वो आपके सामने अब इस chapter में रखा है. So sleep is a very complicated topic. बहुत सारे students को नहीं समझ में आता. कैसे समझ में आएगा? It's not well described. आपने कभी imagine किया है कि why do you guys love anatomy more than any other subject? Say for example biochem, say for example pharma, say for example physio, you know. Anatomy आप सबको बड़ी अच्छी लगती है. उसका रीज़न है भाई एक, उसका रीज़न ये है कि it is very well understood. जो चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होती है वो बहुत अच्छे तरीके से बुक में लिखी जाती है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल वी सी दैट देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ देन वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू रिमेंबर. अब इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि शायद हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, वो 3 चैम्बर शायद यूं करते हैं. देयर इज नो सच स्टोरी लाइक दिस. वी नो फॉर कॉन्क्रीट फैक्ट कि कितने चैम्बर्स हैं, कौन सा नोड किधर है. एनाटॉमिकली देखा हुआ है लोगों ने, एविडेंस है, अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसीलिए उस पर ठीक ठाक तरीके से उनको यकीन है. अदरवाइज फिजियोलॉजी को अगर आप कंपेयर करें, सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, देयर आर सो मेनी हाइपोथेसिस इन बायोकेमिस्ट्री. आप फार्मा में देख लें, आई मीन सिंपल गो फॉर द माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन. आप वी मैक्स के कॉन्सेप्ट्स, 1/v मैक्स के कॉन्सेप्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड है ना यार, क्योंकि बहुत सारी हाइपोथेटिकल कैलकुलेशंस हैं. सो फिजियो भी ऐसे ही है. थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प, very concrete
आर द बेस्ट वंस फॉर यू, बिकॉज आपको पढ़ने में मज़ा आता है. बट एनीवेज, पता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कुछ चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किल लग रही हैं. इट्स नॉट लाइक कि ये चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है. ये चैप्टर है मुश्किल क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं है. ओके, बट एनीवेज, आई विल ट्राई टू मेक योर लाइफ एज ईजी एज पॉसिबल. Sleep is defined as unconsciousness. So sleep में basically आप बेहोश होते हैं. It is defined as a state of unconsciousness, बेहोशी. लेकिन इस बेहोशी में और कोमा की बेहोशी में एक फ़र्क है. स्लीप और कोमा में द ओनली डिफरेंस इज कि फ्रॉम द स्लीप यू कैन arouse a person, you can awake a person by any sensory stimulus. यानी एक बंदा अगर सो रहा है, इसको आप आवाज़ दें ये उठ जाएगा, इसको आप हाथ लगाएं ये उठ जाएगा, इस पर पानी फेंकें ये उठ जाएगा. So if you give any sensory input to that particular person, the person will wake up. Coma is different from sleep कि यहाँ पे आप sensory input दें, the person will not wake up unless it's a movie. Because in movies I've seen those scenes कि जनाब ये जो है ना for some reason the hero is in the state of coma and then suddenly the mom comes in and उठ मेरा बेटा तुझे अभी बदला लेना है, इधर एक थप्पड़ उधर एक थप्पड़, and the person gets up from coma. अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये आपने बंदा लेटाया बेड पे नहीं, बेड से ऊपर. ओ भाई, ये मूवी का हीरो है, हवा में भी लेट सकता है, जो 2 थप्पड़ से कोमा से निकल सकता है. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, राइट. देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ स्लीप, फ्रॉम वेरी लाइट स्लीप टू वेरी डीप स्लीप. होता है ना कभी कभी आप ऐसे सो रहे होते हैं कि आपको हल्की सी भी आवाज़ से आप उठ जाते हैं और आसपास की चीज़ों का एक्चुअली पता चल रहा होता है, सो भी रहे होते हैं. हैव यू प्रैक्टिस्ड, कभी ऐसे हुआ है कि आप नींद में भर भर के खराटे ले रहे हो और अपने ही खराटों की आवाज़ आपको आ रही हो? सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ लाइट स्लीप कि आपको सराउंडिंग की अवेयरनेस होती है. एंड देन देयर इज़ अ वेरी डीप स्लीप जिसमें आपको बिल्कुल सराउंडिंग की अवेयरनेस नहीं होती. Okay, now the two types of sleep, number one is the slow wave sleep and the other one is known as the rapid eye movement sleep. अब इसको कई तरह से नाम दिया जाता है. वन इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, द अदर वन इज कॉल्ड स्लो. इस स्लो को नॉन रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं बिकॉज वन इज रैपिड आई मूवमेंट, द अदर वन वुड बी नॉन रैपिड आई मूवमेंट. सो NREM एंड द रैपिड आई मूवमेंट इज देन नोन एज द REM. बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको यही बात समझनी है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिड आई मूवमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट. सो ये 2 तरह की जो स्लीप पैटर्न्स हैं ये आपको पता होने चाहिए. ओके, Now each night का जिक्र यहाँ इन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूजुअली लोग रात को सोते हैं. सो इट डजंट रियली मैटर अगर आप दिन में सो रहे हैं तो इट विल बिकम ईच डे. ओके, अ पर्सन गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ 2 मेजर टाइप्स ऑफ स्लीप दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर. यानी अब इस बात को अच्छे से समझ लो. देखो बात यह है कि इफ दिस इज यू स्लीपिंग और आप से फॉर एग्जाम्पल रात को 11 बजे सो गए, अब आप पूरी और सुबह आप 8 बजे उठ रहे हैं, तो ये जो पूरा 9 घंटे की आपकी स्लीप है इसमें यू विल गो थ्रू वन फेज ऑफ द स्लीप पैटर्न, देन अदर फेज ऑफ द स्लीप पैटर्न, देन अदर. सो किसी वक्त रैपिड आई मूवमेंट फेज में होंगे आप, किसी वक्त नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होंगे. सो यू हैव ऑल्टरनेट चेंजेस ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप पैटर्न्स. ओके, और वो 2 तरह की स्लीप पैटर्न्स क्या कहलाते हैं? रैपिड आई मूवमेंट या दूसरा कहलाता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट. और इनकी डेफिनेशंस ये हैं: द रैपिड आई मूवमेंट इन विच द आईज अंडरगो रैपिड मूवमेंट. तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद द नेम. द नेम सेज रैपिड आई मूवमेंट एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. इसमें आपकी आईज की रैपिड मूवमेंट होती हैं इवन दो द पर्सन इज स्टिल अस्लीप. ऑल्दो बंदा सो रहा होता है लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखें तो आईज आर मूविंग. अभी इसकी फर्दर डिटेल्स आपको बताता हूँ कि ब्रेन के लेवल पर ऐसा क्या चल रहा होता है कि आईज इतना घूम रही होती हैं. And then the other category of sleep is slow wave sleep or non-rapid eye movement sleep, in which the brain waves are strong and low frequency and the eyes are not moving. अब जो rapid eye movement है, this sleep occurs in episodes that occupy about 25% of the sleep. यानी अगर आप 8 घंटे के लिए सो रहे हैं तो 8 घंटे का 25%, या अगर आप 10 घंटे के लिए सो रहे हैं तो उसका 25% यानी 2.5 घंटे आप कौन से sleep phase में होते हैं? rapid eye movement में. Okay, and that's probably in young adults. I know you are young guys, come on. Each episode normally occurs about every 90 minutes. यानी हर 90 मिनट्स के बाद, हर 1.5 घंटे के बाद रैपिड आई मूवमेंट का एक फेज आता है ब्रेन में, तो आपकी आईज घूमना शुरू हो जाती हैं. This type of sleep is not so restful because the eyes are moving so fast. And it is often associated with vivid dreaming. That's an important. अब देखें, you are accumulating characteristics of rapid eye movement. Rapid eye movement में number 1, the eyes are moving rapidly. Number 2, it is about 25% of the whole sleep. Number 3, it comes after every 90 minutes, and it is not so restful
and it is associated with vivid dreaming. Okay, most sleep during each night is of slow wave. जाहिर है अगर 25% rapid eye movement है तो 75% would be the non-rapid eye movement, slow wave, which is deep, which is restful, and the person experiences during the first hour of the sleep after having been awake for many hours. Imagine आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत देर से सोए नहीं हैं, एंड देन यू सडनली गो टू बेड, सो इमीडिएटली जो फर्स्ट आवर आपका है दैट्स अ डीप स्लीप. आप फ़ौरन से खट करके सो जाते हैं, आपको आसपास का कोई होश नहीं रहता. दैट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज देन द ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो है स्लो वेव एक्टिविटी, नॉन रैपिड आई मूवमेंट. अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो शुरू में सबसे पहले रैपिड आई मूवमेंट का फेज़ आता है, उसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट आता है, और सुबह जब उठने लगते हैं उसके बाद दोबारा रैपिड आई मूवमेंट का. ऐसा नहीं है. अक्सर जब आप it all depends, and as I said, we do not understand this very correctly, but it can also be possible that as soon as you go to bed, initial phase आपका कौन सा हो, non-rapid eye movement, which is a deep sleep. It depends how tired you are and all those sort of things, okay? So, and then rapid eye movement comes after every 90 minutes. So, this was a very super duper paragraph. In fact, पूरे chapter का summary इसी में. Now, rapid eye movement, sleep की कुछ और characteristics. इसके देखो नाम जमा होते जा रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, ठीक हो गया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल मूवमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीसिंक्रोनाइज स्लीप. तो ये सारे डिफरेंट नाम हैं रैपिड आई मूवमेंट के. एंड इन अ नॉर्मल स्लीप, नाउ वी नो दैट बाउट्स ऑफ रैपिड स्लीप लास्टिंग 5 to 30 मिनट्स, यानी हर 90 मिनट्स के बाद ये आ रहा है. और कितनी देर तक रैपिड आई मूवमेंट का साइकिल रहता है? 5 to 30 मिनट्स. दैट्स द ड्रीमिंग टाइम, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन ईजिली अवेक अ पर्सन बिकॉज द पर्सन इज नॉट सो deeply restful. Okay, when the person is extremely sleepy, each bout of rapid eye movement sleep is short and may even be absent. Now ये point सुने जरा, बहुत important है. अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो all you experience is a very deep sleep, and that deep sleep does not contain any rapid eye movement. बिकॉज रैपिड आई मूवमेंट क्या है? रैपिड आई मूवमेंट है जब आप इजीली कोई भी आपको हल्का सा छेड़छाड़ करेगा आप उठ जाएंगे. दैट इज रैपिड आई मूवमेंट. लेकिन डीप स्लीप में तो फिर ऐसा नहीं होता ना. यू आर जस्ट डीपली स्लीप. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली स्लीपी, ईच बाउट ऑफ यानी ईच एपिसोड ऑफ रैपिड आई मूवमेंट इज शॉर्ट and may even be absent because you are deeply sleeping. As the person becomes more rested, अब ये है कि 6-8 घंटे की आपकी मज़ेदार नींद हो गई है, अब रैपिड आई मूवमेंट तेज़ी से आएगा. So if you look at the graph for example, so this is your sleep time and you are very tired. तो first hour में say for example it was deep sleep for 6 to 7 hours, and maybe at 7 hours you now have rapid eye movement का episode, and this is the time when you are ready to wake up. Okay? राइट. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रैपिड आई मूवमेंट के. दे आर सुपर इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में है यही और है ही कुछ नहीं. रैपिड आई मूवमेंट है सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 1, इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप यूजुअली एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग एंड एक्टिव बॉडी मसल मूवमेंट्स. ये बात हम कर चुके हैं कि ड्रीमिंग के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट है. द पर्सन इज इवन मोर डिफिकल्ट टू अरोज बाय सेंसरी स्टिमुलाई देन ड्यूरिंग डीप स्लो वेव, एंड येट पीपल यूजुअली अवेकन स्पॉन्टेनियसली इन मॉर्निंग during an episode of rapid eye movement sleep. अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक अभी मैं पीछे जो बात करता आ रहा हूँ उससे काइंड ऑफ इम्प्रेशन ये मिल रहा था बार बार कि with ज़रा सी छेड़छाड़ the person can wake up very easily because this is not deep sleep. But contrary to the concept, look here, this is important to understand. The person is susceptible to awakening but by own wish and will, because rapid eye movement की presence का मतलब ये है कि the person is not in the deep state. When the person is not in the deep state, the person is susceptible to be awakening by himself or herself. So this point should be taken very very carefully with the previous discussion that we have been having. I was trying to build up you a concept कि rapid eye movement में the person is in the active state, not so deep, but that is something very important जो आपको अच्छे से समझना है इस point को. Okay, मैं again going to repeat this. The person is even more difficult to arouse by sensory stimulus. Okay, then during the slow wave type of sleep, and yet people usually awaken spontaneously in morning due to rapid eye movement. तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड टू द सेंसरी स्टिमुलस, बट दैट इज द रीजन टू गेट अप.
Spontaneous awakening इसी rapid eye movement की वजह से होती है. Okay. Now, muscle tone throughout the body is exceedingly depressed. So the muscle tone is depressed. Perhaps there is inhibition from the spinal muscle control areas. Heart rate and respiratory rate usually become irregular. Dream की state में दिल की धड़कनें किसी heroine को देख लिया dreams में and the धड़कनें goes here and there. This is what happens. And that's kind of an organic change in your body. Despite the extreme inhibition of peripheral muscles, irregular muscle movements do occur in addition to rapid movements of the eye. So, देखें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें if and but हैं. एक तरफ वो कह रहे हैं कि rapid eye movement में बंदा less deep होता है, obviously, superficial sleep में होता है, तो इसको उठाना आसान है, उठना आसान है. दूसरी तरफ कह रहा है कि sensory stimulus ज़्यादा काम नहीं कर रहा है. फिर यहाँ कह रहा है कि muscles inhibited होते हैं लेकिन muscle movement हो रही होती है. So read these paragraphs with great care. The brain is highly active in rapid eye movement. So this is one fact for sure कि the brain activity is super duper. और अगर EEG पे भी देखें तो आपको waves नज़र आती हैं काफ़ी active. In summary, the rapid eye movement sleep is a type of sleep in which the brain is quite active. However, the person is not fully aware of the surrounding and actually is in sleep, but the person can get up from sleep obviously due to rapid eye movement. अगर वो deep slow wave sleep में रहेगा तो सारी जिंदगी सोता रहेगा. Okay? Right, now the contrary is the slow wave sleep. We can understand the characteristic of deep slow wave sleep by remembering the last time we were kept awake. यानी अगर आप बहुत देर तक जागें और थक गए हों, बुरी तरह चूर हो गया हो आपका जिस्म थक के शिद्दत से, and now you go to bed. See, you will be in a deep sleep, so comfortably on your bed and sleeping like anything, and you don't remember anything, you don't have any dreams. That is the deep sleep. Okay, the brain is so slow and you are in a state of deep sleep, honestly, and that is the most part of your sleep, about 75% of your total time. Although slow wave sleep is frequently called the dreamless sleep, but you can have nightmares in that part. So again, there is no hard and fast rule of thumb. Okay, things can happen this way or that way. Now, so that's what happens. Okay, now this one single page is a very important page in sleep physiology, where you understand the basic concepts of rapid eye movement and the counterpart, the slow wave type of sleep. Now, ये होता कैसे है? I told you we don't know. We don't know how does the sleep actually is initiated, how it is maintained, why does rapid eye movement phase is there, and why there is a slow wave type of sleep pattern. We don't know the exact physiological details, but there are some hypotheses. बाज़ लोगों का मानना ये है कि there are certain centers in the brain जो sleep को actually initiate करते हैं. बाज़ लोगों का मानना ये है कि there are certain neurotransmitters in the brain which actually initiate the sleep pattern. ये theories हैं. There are some hypotheses which are postulated, और वो कुछ theories हम देख लेते हैं जो written है यहाँ पे, and we don't exactly know for sure कि 100% ऐसे ही होता है. But anyways, what is written in the textbook is something that we have to study. So, sleep is caused by an active inhibitory process. An earlier theory of sleep was that the excitatory areas of the upper brainstem, the reticular activating system, simply became fatigued. तो आपका जो reticular activating system है in the brainstem, जब वो सारे दिन की activity के बाद fatigue हो जाता है, then it induces sleep. That is a simple story. Okay? An important experiment फिर किया गया कि जी ब्रेन स्टेम के एरियाज को काट के देखा कि अब स्लीप का क्या हो रहा है, अब स्लीप का क्या नहीं हो रहा है. सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद दे रीच टू दिस कंक्लूजन कि परहैप्स दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर. बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स इसके बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी भी थे. सो दैट इज़ नॉट 100% एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ स्लीप इज़ इंड्यूस्ड. देन some people believe that there are neuronal centers which actually play a role in induction of sleep. Stimulation of several specific areas of the brain can produce sleep with characteristic near those of the natural sleep. So, आप एक particular area of the brain को stimulate कर रहे हैं और उससे नींद आ रही है. अब वो areas कहाँ हैं? So, people believe that these areas are the raphe nuclei in the lower half of the pons and then in the medulla. So, these are the areas which can induce natural sleep. Well, that's the theory, and the chemical they use is the serotonin. Stimulation of some areas in the nucleus of the tractus solitarius can also cause sleep. Then sleep can also be promoted by stimulation of several regions in the diencephalon, such as the rostral part of the hypothalamus and diffuse nuclei of the thalamus. So these are all theories again, nothing known for sure.
Lesions in the sleep promoting areas can cause intense wakefulness. So ये अब sleep causing areas हैं जिस पर काफ़ी हद तक consensus है कि pons and medulla के areas, hypothalamus के areas, thalamus के areas, and nucleus tractus solitarius. These are the areas which can be considered as areas of inducing sleep. अगर इनमें problem होगी, there will be problem with sleep patterns. और अगर इनमें कोई भी लीजन है, ट्यूमर लीजन, हेमोरेजिक लीजन, infarcts, whatever, discrete lesions in the raphe nuclei, for example, leads to high state of wakefulness. Have you seen some persons जो सोते ही कम हैं, बहुत ज़्यादा जागते हैं? So think about कि उनके sleep areas में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. So serotonin by far is considered to be the major chemical responsible for sleep pathways, although we don't know this for sure. There are some other chemicals as well. Experiments have shown that the cerebrospinal fluid and the blood or urine of animals that have been kept awake for several days contain substances that will cause sleep when injected into. So these are all animal studies, and people believe there are miramyl peptides, there are delta sleep inducing peptides. But again, I would not ask you to make concrete concepts on this one, because these are all experimental things. Now, REM, rapid eye movement sleep की cause, it is not understood why slow wave sleep is broken every 90 minutes and then the rapid, ऐसा क्यों नहीं है कि you go to bed and you go to deep sleep and you wake up in the morning? Why there is rapid eye movement every 90 minutes? So, however, drugs that mimic the action of acetylcholine, yani drugs which are like acetylcholine, increase the occurrence of REM sleep. So, it is now a theory that perhaps acetylcholine circuits in the brain are responsible for inducing rapid eye movement every 90 minutes. But again, that's not known. How does that happen? Why does this happen? Okay. Now, do you go to sleep and then keep sleeping for the rest of your life? No. That's called death. You sleep and then you are awake. So the preceding discussion have merely identified neuronal areas, transmitters, and mechanisms that are related to sleep. Merely identified, okay? Because we don't know yet. They have not explained the cyclical reciprocal operation of how does this happen. Nobody would explain it because this is not very well understood. When the sleep centers are not activated, the mesencephalic and the upper pontile reticular active nuclei are released from inhibition, and therefore you are all the time awake. So this is all kind of theoretical paragraph. Nothing so concrete there. Now, orexin, also called hypocretin, is produced by some neurons in the hypothalamus that provide excitatory input to many other areas of the brain where there are orexin receptors. Obviously, that's going to work on some sort of receptor like any other neurotransmitter does. Orexin neurons are most active during waking and almost stop during slow wave. And so another name that you should remember: serotonin, miramyl peptides, delta sleep inducing peptide, and now orexins. Okay, right, Janab. एक concept ये है कि so why do you sleep basically? Why are you not awake for the whole 24-hour time period? And the theory is obviously you need to recharge yourself. You have to be back in action. But there are evidence that sleep is important for homeostasis. So it is important for physiological controls of a lot of different things. There is little doubt that sleep has important functions. There is little doubt that sleep has important functions, which means that it is kind of for sure that sleep is essential for you. Experimental animals में अगर आप rats में for example ये experiments किए गए कि 2 to 3 weeks you tend to make these rats awake all the time. You don't allow them to sleep. वो रेस्ट करने लगे, आपको शोर बजा दें, छेड़छाड़ कर दें, गाने चला दें. So you intentionally, experimentally keep them awake, and they died. So they actually can die. So sleep is super important for you. You cannot survive without sleep. Okay. Sleep causes two major type of physiological effects. Number one, the effect on the nervous system, and second, the effects on other functional systems of the body. So mammals and even invertebrates sleep more in the setting of infectious as well as non-infectious illness. So they sleep more during illness. किसी भी तरह की बीमारी, they sleep more. And every animal you know on the planet has some sort of sleep pattern. So this is how you know that it's a process which is evolutionarily conserved. ऐसा नहीं है कि जितने जितने smart होते गए evolution के साथ organisms उनमें sleep खत्म होती गई. नहीं, sleep is conserved throughout. So this is super important thing. Sickness-induced sleep has been suggested to be beneficial response, and it gives some benefit to the body. What we don't know. Lack of sleep
certainly affect functions of the central nervous system. Prolonged wakefulness is often associated with progressive malfunction of thought process and behavioral changes. We are all familiar with increased sluggishness of thought if you are not taking rest. They can be psychotic episodes. So this is very important. Sleep has also been postulated to serve many functions, including neural maturation, facilitation of the memory, forgetfulness खत्म होती है, cognition increase होती है, clearance of metabolic waste products generated by neural activity awake the brain. So there's so many. I summarize all of them as one heading called homeostasis. So sleep is important for your physiological homeostasis. We might postulate that principal value of sleep is to restore natural balances among the neuronal centers. So that's kind of a shutdown. अभी दुकान बंद है, कल आना, तब तक हम अंदर setting कर लेते हैं. Sleep is one of a mystery in neurophysiology, but we know very little about it. But this is something very, very good. I mean, everyone likes to sleep. Come on, guys. And you just imagine कि आप बहुत थके हुए हैं और फिर आप 1-2 घंटे की भी अगर नींद लेके उठे हैं, how fresh you are. So very important. And I think इस पूरे चैप्टर का जो बॉटम लाइन है वो ये कि you should know the differences between rapid eye movement and non-rapid eye movement. Okay? Dreaming कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, and then the blue boxes will cover just like neuroanatomy in separate boxes. So all the very best. That was a very complicated chapter to me. But believe me, students just leave this chapter. But read the chapter watching my video and you should be good understanding the concepts of sleep. Okay, so I would request at the end to subscribe the channel, share the video and hit the bell icon so that you can share this free knowledge with all your medical colleagues. My name is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures.